whatever Anamika has said, I can resonate with it all. So my journey has also started from an insecure attachment style, and so I've been on my healing journey for few years now, and I think Anamika and Akarma has witnessed it very closely. So yeah, I can say from my personal experience, like to becoming secure, it's not like you have realized and you became secure. It's a process. So sometimes you feel you became secure, but then certain things show up. So it was like earlier, I many a times I used to connect on such calls and while doing my self work, my inner work, and I used to share that whenever I feel I got grip on something, I fall back. Whenever I feel like now it is sorted, I fall flat on my face. So earlier it used to be like every 1 week or in 15 days, I feel like now everything is sorted. Now, then I fall back so quickly. Now the frequency has decreased. Like now I fall back after 2 months or 1 month, but I do fall back even now. So yeah, again I'm on my roller coaster ride that got me in the call to remind me of certain things to get reminded of. So these calls are very precious. As Akarma used to say, right? Like we keep following such content or um, get in, always be always consume such content in order to remind ourselves like why we are doing this, and sometimes we lose the track and we want to get assurance like or guidance, both the thing, if you're doing something wrong or what else you need to um, look towards on your path at this moment of time. So yeah, I can resonate with it. Yeah, that's it I wanted Great. to share. Thanks, Shichi. Thank you for that. That's wonderful. Yes, we know that you have been on working on yourself for um, even before you met us. You were already working on yourself for some years also before you met, and I think you've been connected with us for almost more than a year, Yeah, almost close to 2 years now. yeah. So mm, mm. Yeah, It before is like meeting you that. guys, I was just falling. But after Mhm. meeting you, after getting guidance from you, I started getting up as well. But you only taught me that falling is the process. You will keep It falling. is the correct. It is what we have mentioned in our workshops as well on Stuckme, that this is an iterative process. No self work, whether you do it with us, you do it with somebody else, you do it yourself, it doesn't matter. It doesn't matter who you are doing it with or you doing it yourself. The one and only thing, if all of you can really like understand and grasp this, that no self work is like a training. It's iterative in nature. You have to keep revisiting the same thing, keep answering the same questions, keep redoing the same thing, so then you can observe your progress. That is the way self work happens. The problem that we have observed that people don't understand this fully is because of the way our education system, or the way we we have been brought up, right? 15-20 years we spend in school and colleges. We study in one class, move to the other, then study, then move to the other. We never revisit a class that we have done. So if you've done fifth standard, it's done. We move to sixth. Nobody in 10th standard will go back and do fourth standard again, or sixth standard again. That's not how education system works. So we just keep moving on. We have done this. So it's like a checkbox kind of a thing. And it applies there. There it is fine, because those subjects are like that. Maths, you have learned certain things. You've learned 2 plus 2 is equal to 4. You understand this. 2 plus 2 is going to be 4 only. Even if I ask you 20 years later, or if I ask 20 years ago, 2 plus 2 is going to be 4.
You learn geography, you learn chemistry, you learn biology, you learn whatever. Once you have learned, it's set. The answer will not change. The question and the answer stays the same. But in self work, that's the paradigm shift, that the question can remain the same but answer changes, and that is what shows your progress. If the question is the same and your answer changes every time I ask you that question, you are giving me a different answer, that shows your evolution. And But it also doesn't I apply. wanted to I wanted to ask, sort of, I got this opportunity. Also, we kind of become oblivion to what we have learned before. Sometimes what I've learned and practiced, I kind of lose that. I did not come back to that realization which I had earlier, and I felt shorted because of that realization. But we now don't I'm have not. to we don't have to that is the thing. Let's say, for example, I've taken this example a few times. I'll give you an example of this thing. Because previous answer doesn't matter. It doesn't matter. So um, let's say I ask you, Shuchi, who are you? And then, if let's say your spiritual journey hasn't started, then mostly people will answer it in the sense that I am so and so working in this and this company, I have this title and whatever. That is what you will give me your introduction. Anywhere we will meet, that is what you will tell me. So that answer is going to be standard answer, that is going to be there. But let's say you go on a spiritual journey and I ask you, who are you? Let's say you join Brahma Kumaris, you attend their lectures for 2 3 months, you have a good realization about things, and now you understand, okay, I'm not just this, I'm this also. You may decide to change your introduction based on that. 6 months, 1 year down the track, you will probably learn more in Brahma Kumaris over there. You'll have more realizations. You will probably change your introduction again. So 1 year later, if I ask you, who are you? You are giving me that answer. It doesn't matter what answer you gave me 6 months back. That answer is gone. That answer is redundant now. It's obsolete. That is showing your progress. That is showing that you are evolving. Your understanding about things are evolving. Now I'm asking the same question. I'm not changing my question. I'm still asking you, who are you? But And does it like also five, mean yeah. what realizations made you feel sorted or maybe grounded? Now you are not able to find those realizations back again. Is it normal? Like, does it happen that If you're not? that was a permanent um, realization, then you cannot, you can never lose it. But if it was something you realized in that moment and it was not a permanent thing, it was perhaps, it was just a fake thing, then you will Hmm, lose it. okay. It was not real. It may have appeared real. I'm not saying you were faking it. I'm saying Hmm, that maybe you realized it at that time as that, but then it wasn't the real realization. hmm, So it is possible that you probably realized, okay, you felt 6 months ago, though I was calm and all that. That is, um, that could be very, what the right word I'm trying to use is, could be inauthentic in the sense, um, for example, let's अब कल ही हम बात करें थे इस टॉपिक के ऊपर किसी के साथ. So the word acceptance. Majority of people that we have come across, that when they use the word acceptance, um, who don't fully understand the word acceptance. If we really understand what they are saying, then you will realize that although they are saying acceptance, but there is a flavor of withdrawal in there. It's not really acceptance, it's just withdrawal. It's just that
oh, they are doing this, these people are like this, these people are, so you've done so much, you've tried to change people, you've tried to change this situation, this that, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो you just given up, you've just withdrawn and you call it acceptance. अभी कुछ नहीं हो सकता है, मैंने हाथ पैर मार लिए, बहुत कुछ कर लिया, ये सब कर लिया, अभी मेरे को acceptance आ गई. तो people will use the word acceptance, they will not say withdrawal, क्योंकि withdrawal use करना बड़ा नेगेटिव लगता है ना, एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करना बहुत पॉजिटिव साउंड करता है, तो हम बोलते हैं एक्सेप्ट. वर्ड से क्या होता है, यू नॉट सेइंग विड्रॉल, यू आर सेइंग एक्सेप्टेंस, बट यू आर एक्चुअली मीनिंग विड्रॉल ओनली. कर तो विड्रॉ ही रहे हो, बिकॉज द मोमेंट द अदर पर्सन डज दिस और दैट, इट इज स्टिल ट्रिगरिंग यू. सो एक्सेप्टेंस कहाँ है, विड्रॉल ही है, हेल्पलेसनेस थी, इज दैट आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट दिस. Yeah, so, it's not working, so अभी क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो you just, तो फिर अच्छा अभी I am calm, I am this and that, but वो है कहाँ, वो तो फेक ही है. फिर हो सकता है कि 6 महीने के बाद जाके तुमको एक्चुअली में एक्सेप्टेंस समझ में आए कि क्या है. And when you actually understand acceptance, it may then agitate you, and then you will see, अरे 6 महीने पहले तो मैं काम थी, अभी तो मैं समझ के एजिटेट हो गई हूँ. Oh, I did not understand it. It agitates you as in how real acceptance could agitate. Sometimes what happens, sometimes how things agitate people is that sometimes when it clicks them, when it clicks, when these things click them, people can go into guilt. People can go into resentment, thinking मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया. Right. कि let's say they have been very angry with their mother or father. तो अभी तक क्या था, अभी तक एक्सेप्टेंस, अरे वो ऐसे बोलते ये करते, अभी तक विड्रॉल में जी रहे थे, जिसको एक्सेप्टेंस बोल रहे थे. तो ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बैठेंगे, या बात नहीं करेंगे, या बहुत लिमिटेड कॉन्वर्सेशन रखेंगे, एंड वी जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस ताकि वो लोग ट्रिगर ना करें, और उसको हम एक्सेप्टेंस बोल देंगे, बट एक्चुअली में विड. अभी धीरे धीरे 6 महीने में समझ में आया कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, अभी समझ में आया कि दिस इज. तो फिर ऑल ऑफ अ सडन अ न्यू रियलाइजेशन सीप इन कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रहा था, मैं उनके ये कर रहा था, नो, देन गिल्ट कम्स एंड ऑल दैट कम्स. फिर वो सारा हो जाता है, कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, उनका कितना दिल दुखा दिया, मैंने उनके साथ ये नहीं किया, मैं उनके साथ ये टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया. देन पीपल गो इन that kind of agitation can also sink in. So does it mean when your perception expands and you see the things or the situation in various perceptions, various perspectives, उस समय, and when that could be real and that could not be real acceptance, but that leads to guilt and agitation. Is that what you mean? Did I get it right? दोबारा से बताओ, I didn't understand. So आपके बोलने का मतलब है, you meant to say that so when so earlier you kind of withdrew from the situation and you called it acceptance. Now after 6 months your perception changes as you evolved. Now earlier you used to see your parents as culprit, or you feel resentful and you sort of avoid them so that you don't get triggered again, because you're on healing journey and you want to be calm and all, so you are putting effort. Now after 6 months, when you evolve a bit more, then your perceptions expand, and correct. After that definitely you see the situation from different angles, from their angles too, from more of a humanitarian angle, or more of a not from separation but from oneness with all the beings, maybe say that way. So from then you will see it like, oh, they were also the victim. If I am using it correctly, you will also see that they were also suffering. It is possible कि you can start to operate from some compassion. तो अब उनका भी तुम थोड़ा, अभी तक तो उनके wounds या उनका कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा था, अभी तक तो तुम्हें ये लग रहा था कि वही कल्प्रिट है.
अब तुम्हें दिखने लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं तो वो भी विक्टिम है, तो नाउ यू आर यूजिंग सम कंपैशन अराउंड इट कि हाँ मैंने कभी देखा नहीं था कि बट विक्टिम तो वो भी बहुत है, उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, इट हैज मेड देम लाइक दिस एंड ऑल दैट, सो नाउ दैट कंपैशन इज सिंकिंग इन. But how can we be assured final, or say not final is very rigid thing, but this is the real Your acceptance, voice true is breaking. acceptance that we wanted to. Oh, just 1 minute. Is it okay now? हाँ नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है. Is it fine now? Hello. Yeah, this is better. Yeah, I mean Yeah, to yeah, this say, is better. Yeah, yes. go ahead. Okay. So I'm saying that, okay, then you get into that state of acceptance when you can see from their perception too, and you have genuine compassion for them. But again, how will you be so sure, or how do we know that is now the true acceptance? Or after this, you will not again evolve again at certain other level, and like now this is permanent. How do we get to know that this acceptance is it's real? I don't know, I'm sounding नहीं दिस एक्सेप्ट नहीं, वो तो ठीक है. अभी इस सिचुएशन में यू गेन्ड एक्सेप्टेंस अबाउट योर पेरेंट्स, बट स्टिल एक्सेप्टेंस अबाउट यू इज रिमेनिंग ना, अदरवाइज यू वुड नॉट बी बीटिंग योरसेल्फ. सो अभी भी पार्शियली है ना. यू आर नाउ कंपैशनेट एंड एक्सेप्टिंग देम, जिनको पहले कल्प्रिट समझ रहे थे अभी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में अपने आप को कल्प्रिट बना दिया ना. तो अब उसमें से भी तो बाहर निकलना है, तो जब उसमें से भी बाहर निकले तो ट्रू एक्सेप्टेंस आ गई ना. Well, anyway, I'm not sure that ये last वाला part I'm able to relate to, but I'm pretty sure if you have said it, it will make sense to me sometime. One Like thing maybe I when wanted to ask you, Shuchi, were you trying to ask that how do you get that guarantee कि अभी true acceptance आ गया? Is that what you wanted to ask? गारंटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट व्हाट आई मीन टू से जो मैं हमेशा पूछती हूँ कि दैट नाउ आई रिमेम्बर, आपने मुझे मेरे सारे क्वेश्चन पहले भी आंसर करे हैं, सो आई नो, बट व्हाट आई मीन टू से कि how we ensure that we will, no, I understand we will fall back, we may fall back again as you were explaining secure attachment style, but when it will stop impacting you that much, or when you will stop getting into the old patterns and old traps again. I think now I feel that is important, that you won't fall back into the traps, old traps and old patterns. That is, I think, I find important, because falling doesn't bother me now, but what bothers me, what is bothering me at this stage is falling back into old patterns, not getting hold of the thinking, or again that right, what I used to think that I have fixed, or I'm able to maintain my thought process, or being mindful, but then when I feel like I lost it again, I'm not able to get hold of that sort of positive thinking, or the kind of thinking that I felt like it sinked into me, but now I'm nowhere seeing it. I'm not able to get hold of it. That's what I mean to say, if I made sense, Anamika. Was I able to explain? Yeah, but you have asked this question quite a few times to us. I know. Answer is going to be the same. कि ये क्वेश्चन ही आने का मतलब है कि अभी बचा हुआ है कुछ, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मतलब और इफ आई टेक एनीबॉडीज एग्जाम्पल, मतलब whom people whom I know, who are in my circle, so very few people, whom I can see that okay, they are operating from secure attachment style और सब ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही आना बंद हो जाता है. That is the whole sign कि ये question, because see, it's not that I don't fall back,
I fall back. मैं अकर्मा को वही all the time, you know, I keep eating his head and we keep talking about all of these things. मैं बहुत सारी चीजें I keep discussing it all the time. But इसके लिए ये this thought does not arise in my head कि you know ये कब होना बंद हो जाएगा. Because see, these kind of things are, you know, trying to make those things permanent जो कि permanent हो ही नहीं सकती है ही नहीं. And the more we try to make it permanent, the more stronger it gets. It's the same thing like what you resist persist, right? So ये question ही आने का मतलब है कि but फर्क क्या पड़ता है? अभी the thing is कि अभी क्या है, right? अभी मान लेते हैं कि आपके सामने कोई opportunity आती है to heal yourself. You heal yourself, you move forward. Right? And then when you reach the space where you get the realizations, where you find all of these things, you be happy at that time that you okay, अच्छा अभी ये नया information आया, नई wisdom आई, नया realization हुआ, how now I can go forward and integrate it in my life, और मैं कैसे इसको implement कर सकती हूँ, operate कर सकती हूँ, because the thing is life में ये तो चलता ही रहेगा. The thing is कि अगर मान लेते हैं ये खत्म भी हो गया, लेकिन ये फिर भी खत्म होके भी कभी खत्म नहीं होने वाला है. Because it's not about finishing the challenges, it's about becoming resilient and courageous and capable enough to face the challenges. Right? तो ये वाला चला भी गया तो कोई दूसरा आ जाएगा. खत्म होने वाली तो बात है ही नहीं, और खत्म हो गया तो फिर if I tell you one of the universal laws, I don't remember its name, but it very, you know, beautifully states this thing कि अगर जिंदगी से सारे challenge हटा देंगे ना, so human beings will not be able to survive actually. Yeah. So all of these things actually are important for our survival also. हम survive ही नहीं कर पाएंगे अगर life से challenges खत्म हो गए, right? And if your question is कि अच्छा मुझे दूसरा challenge चलेगा, बट ये वाला चैलेंज क्यों आता है, ये वाला चैलेंज खत्म हो जाना चाहिए, सेम टाइप का क्यों आता है, हाँ सेम टाइप का क्यों आ रहा है, नया क्यों नहीं आ रहा है, देन यू टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट थिंग कि अगर ये सेम टाइप का आ भी रहा है, सो मे बी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है विच स्टिल नीड्स टू बी कोलेटेड, स्टिल नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, वो कर लो, खत्म करो. बट ये इस चीज में, ये क्वेश्चन में फंस जाना कि ये आ क्यों रहा है, that is where we you know multiply and extrapolate our own issues. तो हमारा फोकस सॉल्विंग से हट के हमारा क्वेश्चन इस चीज में आता है, हमारा इंटेंशन और फोकस इस चीज में आ जाता है कि ये हो ही क्यों रहा है. Right, and I think that is what filling me with little resentment towards God, you can say, and little anger. And I know this is not healthy, or maybe whatever it is. So it feels like नहीं अभी कोई बचा नहीं है ना ब्लेम करने के लिए, अभी बेचारे भगवान ही बचे हैं लिस्ट में आके. तो जब कुछ भी, हाँ जब हमारे पास कुछ भी नहीं, I am the same, okay, हाँ I have been through this phase and I have been through this phase for such a long time in my life कि जब सारे रिलेशनशिप्स में किसी से कोई गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है अभी फिर भी फिर उसके बाद गॉड आ जाएंगे. Yeah. This is nothing but, you know, another kind of entitlement issue that we have. Earlier we used to have this entitlement with people in our lives, and now we have this entitlement with God. But the thing is that, you know, God भी वही हमें बोल रहे हैं कि सब कुछ तो दे दिया है ठीक करने के लिए, चलने के लिए पैर दे दिया, बॉडी दे दी, दिमाग दे दिया, you have all the resources and you have given me everything, कि मतलब सब कुछ दे दिया है, and we have sent you out in this world to play the game, और तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं गेम नहीं खेलूंगा, तुम आके गेम खेलो. So that's really unfair. Yeah, and also I'm just getting reminded of one more thing that you have said to me earlier, initial stages, like you have told me, right, once, that you haven't felt lightness, right, or you haven't felt being light in your mind and body
you have said it long back to me, right? And you have told me once that if you once experience it, you wants to go back to it again and again. So I guess that is what also bothering me. So I just feel for a brief period of time in last couple of months I did experience that, like nothing was bothering me, and I think I've shared that with you, that I was at peace and light, and I was like like it was, I was kind of in a neutral state. And then when I lost it, then I'm trying to catch it back, and I'm not able to see where, how. So yeah, and you said that this too to me. So, just Shuchi, just I wanted to use this example. तो जो तुम पहले पूछ रही थी ना, वही मैं बोल रहा था कि it could be fake. तो where you say I was in a neutral state, but now you are saying I am trying to. So you were actually never in a neutral state. तुमने तभी भी उसको पकड़ा हुआ था, पर तभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा था. समझ अभी आया जब वो छूट गया. तो उस पकड़े हुए को तुम न्यूट्रल समझ के चल रही. ओके, मतलब मैंने उस स्टेट को बना के काइंड ऑफ मैं उसको पकड़ के बैठी थी कि नाउ आई एम फीलिंग लाइट एंड स्टे हियर काइंड ऑफ दैट. हाँ, क्योंकि वो था उस टाइम पे, तो इसलिए तुमको वो लग रहा है कि वो है, लेकिन जब वो चला गया तो अब समझ में आ रहा है कि पकड़ा तो तभी भी हुआ था, और अभी भी पकड़ना चाह रही हूँ. जब तक कॉन्ट्रास्ट, तभी तो हमें लाइफ में चीजें तभी समझ में आती है ना जब कॉन्ट्रास्ट होता है. अगर एक ही चीज रहेगी तो फिर हमें समझ नहीं आएगा. जैसे ये बोलते हैं ना कि मछली को कभी नहीं पता चलता है कि वो पानी में है. तो you were holding it at that time also, you are holding it now also, although there is nothing to hold, but you still want to hold it. So you're calling it neutral, so it was not never neutral. So it's not that I reached that stage and I've fallen from it. That's what I'm calling fake. You never reached that stage. Okay. वो न्यूट्रल स्टेज में अगर तुम होती एंड यू वुड हैव रियली रीच दैट न्यूट्रल स्टेट, तो यू वुड हैव बीन न्यूट्रल राइट नाउ आल्सो. तो फिर वो हो या ना हो, यू वुड हैव बीन न्यूट्रल ना. दैट इज व्हाट न्यूट्रल मींस. मतलब यू मीन टू से कि फिर जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं भी अभी मुझे ज्यादा रियलाइजेशन नहीं है, आप जिस थोड़ा परमानेंट वाले न्यूट्रल का बोल रहे हैं, बट उस टाइम पे जैसे नथिंग यूज्ड टू बॉदर मी, इवन अ डिस्कम्फर्ट एट वर्क प्लेस और लाइक एट होम डजंट यूज्ड टू बॉदर मी. आई डू नॉट यूज्ड टू गिव इट मच थॉट. आई वाज लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट and so easy in that kind of thought, whatever you used to guide me, right? Like you won't get questions on it, and I do not really used to get questions on anything. So that kind of state. But but yeah, now again तो I'm saying कि ये जो स्टेट है, तुमने इस स्टेट को पकड़ लिया. तो इस स्टेट के जाने का दुख तो है ना. बट मुझे ये भी पता है कि वो फिर हो जाएगा. बट हाँ, इफ आई एम डूइंग इट राइट और नॉट, ये मुझे रियलाइजेशन है कि अगेन आई विल गेट बैक देयर. बट नॉट इन अ वे जैसे आप बोल रहे हो कि अगेन फिर फेक वे में पकड़ लेना, या पकड़ना मतलब ना होना नहीं, उसे पकड़ने की बात कर रहे हैं हम, पकड़ने की बात कर रहे हैं. तो स्टेट कोई भी हो, और ये बहुत दिस इज क्वाइट नॉर्मल फॉर पीपल व्हेन दे स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन अर्लियर. जिन्होंने पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया होता है, वो शुरू में मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो जब और करने लगते हैं उनसे होता नहीं है, तो वो फिर उसमें फंस जाते हैं कि मेरे को वो वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है जो पहले आई थी. yes. तो दिस इज, इस चीज को पकड़ने को ही हम बोल रहे हैं कि दैट इज द रियल कॉज ऑफ व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि वो तब की रियलिटी थी, अब की रियलिटी है, वो भी ये था, ये भी ये है. तो इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, क्योंकि हम जो चीज हमें पसंद आ गई, जिस चीज को हमने करे, उसमें हम अटक गए. तो ठीक है, ये भी ठीक है कि वो तो मुझे मिल जाएगा. ओके, वी कैन अप्रोच दिस फ्रॉम ऑप्टिमिज्म एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. स्टिल पकड़ा तो है ही ना. हाँ. तो दैट इज द, वो पकड़ना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम. So acceptance was not about holding on to anything. Acceptance was, the real acceptance is as is. Whatever is. Right. हाँ.
Thank One you. more thing I wanted to add for Shuchi, or or everybody else who maybe feels that they are on a spiritual journey. So इसमें ना मतलब in a spiritual journey there are many too many facets, right? So I would actually call it facets. So basically kind of like imagine yourself standing in a place which is surrounded by mirrors, 360 degree everywhere, ऊपर भी पूरा mirror है, नीचे भी पूरा mirror है, right? And each of the mirror is reflecting each other, or there are infinite mirrors. So likewise it's the same truth, सेम ही चीज है, लेकिन वो हमें बहुत सारे डिफरेंट फैसेट्स में नजर आती है, राइट? यू पिक अप एनी रिलीजन, एनी स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एनी डिफरेंट गुरुज, टीचर्स, एक्स वाई जेड, जितना भी कुछ भी हम पिकअप कर लेंगे, they all use different language, different way of explaining things, different paths, different so on and so forth, but वो सारी चीजें are merely facet of the same truth, maybe different levels, facets which belong to different levels of growth. तो हम जिस लेवल पे होते हैं हमें एक लेवल का समझ आता है, फिर उसके बाद हम उस लेवल पे ना वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम उसके एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, we get revealed with another one, and then another one, and then another one, and then another one, and likewise it goes on. और इस on में बहुत बार, I guess we have shared this with you before also, Shruti, कि ऐसा लगेगा that we are falling back, but the thing is that for you to accept the higher level of the truth, this falling back was required. तो आपकी मान लेते हैं acceptance का एक scale है 100 का, उसमें आप 50 तक पहुंच गए हो, लेकिन 60 तक पहुंचने के लिए आपको कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन के रिवील होने की जरूरत है which will feel like falling back, but then you would get and realize a completely different aspect of facet of acceptance, and then you integrate that. So that's why we say that spiritual work is kind of like literally lifelong work. इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है डिफाइंड तरीके से कि हमने पढ़ लिया तो खत्म हो जाएगा. So the thing is that you just take it and integrate it one step at a time. और ये लगता है जो आप पहले पूछ रहे थे that I feel that I've forgotten what I had learned. Same thing happens with me also, कि मुझे कभी-कभी लगता है यार ये तो एक टाइम था, used to handle this particular thing so easily, और ये कितना easy हो जाता था. But then once I go through what life is trying to show me, I realize कि अच्छा उस टाइम पे जो मुझे सीखना था, life was showing me a different facet of this realization. Now I'm looking at completely different facet. तो मेरे लिए ये चीज होनी भी जरूरी थी. What feels like falling back. It's not easy. It's of course uncomfortable. अच्छा किसी को नहीं लगता है. But then it requires the kind of a perspective to see कि अभी क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है which life is trying to show me at this point of time. And likewise, I just wanted to add to this one, linking it back to today's conversation. This is what we've been pointing. This is another way of saying the same thing. Working towards a secure attachment style or towards your own evolution, it is not continuous improvement. So there will be stages. You will realize something, you will do a certain continuous improvement, you will reach a point, वहाँ पे you have to demolish everything, start all over again. Oh, this is new. This work is like that. This is the reason why I was saying the question remains the same but answer changes. This is the reason why I was saying कि पिछला आंसर आप भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. It's obsolete, it's redundant, it doesn't matter. That needed to go. वो उस टाइम के लिए ठीक था. Right? So एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, लेकिन again that can be another kind of a tangent or very different thing, but just to if किसी को समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन I'll just share this. Let's say people talk about surrender and all that. We keep asking that. On one side they talk about that, on the other side we keep talking about
ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप एंड सो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए द पर्सन हैज टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट. Only when the person has developed the capability of taking ownership and responsibility, then only they can demolish that and work towards that surrendering part or whatever the next level is. But it is not continuous improvement. It is not कि इतना हो गया इसमें मैं 5% और जोड़ के और आगे नहीं. एक टाइम के बाद वो बिल्डिंग ढहने की जरूरत है, नई बनने की जरूरत है. तो फिर लगेगा अगर ये ढहना ही है और नई ही बनानी है तो फिर मैं सीधा वही क्यों नहीं बना लूं. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस क्योंकि दीज आर डेवलपमेंटल स्टेजेस. जैसे ऐसे होता है ना कि ऐसा समझो कि आपको ये बुर्ज खलीफा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने कभी बुर्ज खलीफा आपने कभी उस टाइप की बिल्डिंग बनाई नहीं है. तो आप बोलोगे अरे मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, तोड़ूंगा, ये करूंगा, इससे अच्छा मैं सीधा बुर्ज खलीफा ही बना देता हूँ. लेकिन पहले आपको अपना हाथ साफ करना है ना दूसरी छोटी मोटी बिल्डिंग्स बना के. Yeah, it makes so much sense. Are you understanding? So, Yeah, लेकिन जो आपने बुर्ज खलीफा से पहले बिल्डिंग्स बनाई हैं वो बुर्ज खलीफा के राइट राउंड भी कहीं आसपास भी नहीं थी, है ना. लेकिन उनको बनाने में जो आपका डेवलपमेंटल ग्रोथ हुआ है, द वे यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड ऑल दैट स्किल इज व्हाट यू टेक फॉरवर्ड. यू डोंट टेक फॉरवर्ड द बिल्डिंग, यू टेक फॉरवर्ड द लर्निंग. Right. Yeah. Right? Yeah. So ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम करते हैं, ये जो हम चीजें करते हैं, ये जो हम बना रहे हैं, जो भी हम चीजें बना रहे हैं, it is not about what we are building. It is about what kind of person I am becoming in the process of building that. So whatever I am building, वो तो जाने वाला है, वो तो खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. और उसको करने की जरूरत है क्योंकि उस प्रोसेस में ही मैं बिल्ड हो रहा हूँ. बट कब पता चलेगा कि बुर्ज खलीफा बन गया? ये आई नो इट्स अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, बट कैसे पता कि अब बुर्ज खलीफा बन गया और अब ये नहीं ढहेगा? जिस दिन आप पता लगाना छोड़ दोगे, आई नो you told जिस दिन पता लगाने का ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप हो जाएगा, उस दिन मान लेना बुर्ज खलीफा बन गया. I totally trust on your words because whatever you have suggested हमेशा वही realization हुए हैं मुझे उसी वे में. That's why your guidance is so precious. So question in this between, guys. As you just said कि जिस दिन बुर्ज खलीफा would बन जाएगा तो you'll stop asking. But as a human we have this tendency of asking questions. And also where Karma said कि surrender and all that thing in the end. So when I surrender, let's say when I say ki acceptance aa gayi ki things are okay, going as per the whatever it has to be, taking responsibility as well, but at times why is it so tiring and why is it so like destructive that hame lagta hai ki main haar gayi, yeah, it's like I've given up, I'm not able to go forward then. So sorry, I'm asking this in between. No, that's fine. Lekin I actually didn't understand the question. Can you say it in a different way? Okay. ऐसा लगता when we have accepted things the way they are, you feel defeated. Yeah, I think what she may be trying to say is. But that's what we are saying. That's not acceptance. That's what I said. This is a common understanding of the word acceptance, but it's not acceptance. It's withdrawal. Okay. If you are using the word acceptance and also saying कि I feel defeated, that's withdrawal. वो तो जंग से पीछे हट गए और हार फील हो रही है. वो तो that is that. It's not acceptance. Somebody in the support group asked the similar question. Acceptance is a very esoteric term, तो इसके लिए ना उसको general terms में जब हम use करते हैं तो ऐसा लगता है. But one person asked in the group कि giving up और surrender के बीच में क्या difference है? I think yeah, that's the question. Yeah. हाँ, तो अगर हम acceptance word को हटा भी देते हैं and we talk about giving up and surrender,
गिविंग अप और सरेंडर में वही डिफरेंस है और स्काई के बीच में. कैसे? Although at an external level, in the outside environment, they may appear similar in nature sometimes, but जब हम गिविंग अप की बात करते हैं, हाँ जी. Your voice is not, Anamika, हाँ we जी, can't hear you. अनामिका, your voice is not am I coming. audible now? Am I Yeah, audible now? you are. Yeah, you हाँ, are. Can you हाँ. just repeat last sentence? I was saying that giving up or surrender both actually lie in opposite extremes. क्यों? क्योंकि giving up means that you feel you're powerless. You feel that you have lost the hope, you cannot do anything. अभी सब कुछ खत्म हो गया. अभी nothing's gonna work out, and it's a completely low vibrational, level, emotional True. vibrational scale where we are. Yeah. But surrender is exactly the opposite in the spectrum. It's a very high vibrational state, because when you surrender to something, it's not the space of powerlessness coming from the space कि नहीं मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता. It's the space where the higher power is working through you, right? इसमें ये बात आ जाती है ना, जब आप surrender कर देते हो ना, कि तो उसमें ये feeling आती है कि मैं तो था ही नहीं कभी, ये सब कुछ तो अपने ही हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक I'm just a part of this creation. And when you say you are a part of this creation, just like कि कोई भी wave ocean से अलग तो नहीं हो सकती ना, wave ocean ही है. How do you say कि ये वाली wave और ये वाली wave अलग है? There's no way for us to tell कि इस wave का पानी अलग है, इस wave का पानी अलग है, even though it could appear so. But surrender is a space where you realize that I am a part of this play, and I take this role and I do it whichever way I'm being guided, right? That doesn't mean कि अब हम कुछ काम नहीं करेंगे. हम काम करेंगे, लेकिन उसमें जो मैं मिक्स हो जाता था कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, वैसा ही नहीं हुआ तो दुख हो गया लाइफ में कि बिकॉज मेरे हिसाब से, ये सब चीजें उसमें खत्म हो जाती है. It's a space of absolute faith. It's a space of extreme powerfulness. So, Anamika, sorry to yeah, please go ahead. Just wanted to ask, like, if in case उसके अंदर अनामिका, अगर हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं, आप लेटर ऑन उसे रियलाइज कर रहे हो कि I might have not taken a right decision, और या मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया, but you're like kind of self judging yourself. Is this also okay? Because yes, जो हो रहा है वो तो it's been happening it's by not surrender. अच्छा, okay. हाँ. So जो हो गया उसको भूल जाओ and just leave it to भूल the नहीं जाओगे. See, except that's what, when we started this call, we talked about ownership and responsibility. Ownership and responsibility, ऐसे कैसे हो सकता है that you only take ownership and responsibility of things which go right and wrong in life? When you take ownership and responsibility, you take ownership and responsibility regardless of what the consequence is. अब उसके साथ जो भी consequence आता है, हमारे इंटेलेक्ट को लग सकता है वो सही है, वो गलत है, वो ऊपर है, नीचे है, जो भी लगे, but whatever it is the consequence. And if people are also saying is it right or wrong, then also it is our responsibility and it's our ownership, right? Of course. Okay. ठीक है, thank you. So, Anamika, you said about this surrender wala state, and I just feel I kind of experienced it. Now, again, I don't know that was fake or true, but I think I have experienced that level of faith, as in that it's not me anyway doing, and it's like I realize it. It's not like I've kind of tried to affirm it again and again, but I had that realization that like I was driving with the faith, and I had for a brief period of time. So again, it's like the same, that if I kind of again lost that state of surrender, which whatever you are describing, if I had same kind of realization when like things are going through me, happening through me, and for me, also whatever has happened was part of a plan,
and it has, and also these realization that if whatever happened wouldn't have happened, then I wouldn't be here and I wouldn't be experiencing this level of peace which I'm experiencing now. And that was like total I kind of resonate that statement what you're saying. Yeah, I got your question. इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से इस आंसर देती हूँ कि you must have heard the word samadhi. Yeah. हाँ, अब samadhi. And sorry, just I'm interrupting. That's because since some time I'm getting that thought, you have shared that video with me, that samadhi one, and like since our conversation started, I wanted to share this. Like in that one part was there when he has described. Then in the process of getting into state of samadhi, a person lose that state again and again. So yeah, that's what going in my mind. Exactly. तो मान लेते हैं मैं 10 घंटे with a very strong determination I sit in meditation, ठीक है, and I reach a certain level of samadhi, but it is just a certain level of samadhi. It is not a samadhi which is the permanent samadhi which I have reached, but इसमें because you have trusted, you have experienced and tasted what faith actually looks like. So abhi you have that inspiration in you to move forward on that path, क्योंकि आपने point A देखा था, point B देख लिया, नहीं पता और कितने points हैं, but now you got a direction. But इसके तो इतने सारे levels हैं, and it takes a lot of time for us. Like in if you have seen that video, you must have heard that that guy explains very beautifully that you lose samadhi like countless times, literally countless times, until there comes a point where you're able to integrate it in all the different facets of your life and make it a permanent state to live in. तो ये तो part of the process है ही. अगर लेकिन this is also a very dangerous part of the process, because this is the point जिसमें एक तो पहली चीज हमें ये illusion होता है कि हम वहां पहुंच गए हैं, we have arrived, when we have actually not arrived, we have just seen a glimpse of something. और दूसरा illusion ये होता है हमारे साथ कि अब हम उसको पकड़ना चाहते हैं, और हम जितना ज्यादा उसको पकड़ना चाहते हैं किसी भी चीज को, इनफैक्ट उस चीज को जितना ज्यादा पकड़ना चाहेंगे वो उतनी ही ज्यादा दूर भागेगी. Because it's the simple law of attraction thing that if you continue to say that I don't have it, you will of course create an experience where you don't have it. So we continue to fall back into these two traps जब हम ऐसा कुछ experience कर लेते हैं. So that's the danger of having such experiences. Yeah, right. I just want to summarize it like with a last question of mine. After that, I will wrap up my question. So, as Akarma said, that diminishing of the building, what we have created. So it's like it get diminished, and you feel like you are back to zero. You are you are at the lowest point where you have started. Does it feel like, because what bothers me more is not it getting diminished. What bothers me more is feeling like getting back to zero. Literally zero, like where you have started in it. So that's correct. So that is why I also added to that sentence, and I said ki what you are saying is correct, because that is where majority of people focus on ki what did I achieve at the end of the day, मेरे हाथ क्या आया. So you feel like coming to zero, and this is why when I said कि it's not about the building, it is about the kind of person you become in the process of building that building. So अगर आपको लग रहा है कि हाथ तो मेरे कुछ नहीं आया, तो आप में कोई change भी नहीं आया, so you are not seeing the transformation you have gone through in order to do that, and because of that you're not able to take the next step forward, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो गेन पे था, उस अभी भी उस प्राइस पे था. Right. So if you talk to, like, I give you a very solid example in this case, very practical one. People who train to for Olympic. So those people who commit for 10 years of training for Olympic and all that, not everyone wins gold medal, not everyone wins any medal.
but you ask them, you talk to them, and anybody who has gone through that kind of rigorous training, they have gone through a life transformation. Their character has changed. So it medal तो एक consequence था, medal तो एक bonus था, but हमने medal को ही primary बना दिया. अगर मेडल को प्राइमरी बना देते हैं तो फिर ऐसा फील आता है कि नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. मेडल तो मिला नहीं, 10 साल वेस्ट हो गए. क्योंकि यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट. That is the trap you will fall in if you approach it like that. So if you approach Olympic like that, कि 10 साल ट्रेनिंग की, सुबह 4 बजे उठ के ये क्या वो क्या एंड ऑल दैट, और उसके बाद मेरे को मेडल नहीं मिला, you have overlooked the transformation. And perhaps if your goal was medal, हो सकता है कि आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया ही नहीं. राइट? तो अगर आपका फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पे होता ना पूरा, तो शायद मेडल भी आ जाता. पर अब तो ना मेडल आया और ना ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि आप सुबह उठ के जा तो रहे थे 4 बजे. सी ये लोग जो है ना, ये लोग 10 साल की ट्रेनिंग के बाद जब इनकी एज खत्म हो जाती है, दे आर नॉट इवन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक. दे स्टिल फॉलो द सेम regime. They still follow the same, they still train the same way, they still eat the same healthy diet, they still do everything the same, because they have transformed. They don't know any other way of living anymore. Right? बट अगर मेडल पे ध्यान होता तो बंदा अगले दिन से ही फास्ट फूड, जंक फूड उस पे आ जाता है. अरे 10 साल से मैंने छोड़ रखा था, आज तो दबा के खाऊंगा. एंड इट्स आल्सो लाइक, जैसा आप ही लोग बोलते हैं कि वो होता ही नहीं है सर. मतलब इवन इफ यू वांट टू ईट जंक, वो होगा ही नहीं, बिकॉज़ इफ यू हैव बीन ऑन दैट जर्नी. If you would have transformed, that thought would not even come to you. If the thought is coming to you, that means the thought never left you. You were only pretending कि you're putting efforts to put that thought away. आपको रोज ही जंक फूड खाने का ख्याल तो रोज ही आ रहा था 10 साल से, बट आपने उसको दूर रखा हुआ था. एफर्ट्स लगा के दूर रखा हुआ था, क्योंकि आपने एक्चुअली में समझा ही नहीं था हेल्दी डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है ना. तो ना तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ना तो मेडल मिला. Okay. That is I'm sure it has a lot of wisdom, and I will definitely realize if something I haven't understood, and I just want to end it here. Like whoever is listening, all my nonsense for some time, I just wanted to add it here if it helps someone. Maybe someone might have not got something, but for sure, like there are so many angles to it, and whatever Akarma and Anamika guides, I have gone through each phase, and I don't know what I have. How would I have been able to navigate it without that guidance? So yeah, if someone on that path, so yeah, this guidance really helps. So yeah, thank you so much. Thanks, Suchi. No problem. Yeah. Thank you. Great. Okay. Thanks, Sujata. Okay. Anybody else has anything to say? Yogesh's hand was up. Arthur Yogesh just left. Amy, you want to say something? Yeah, you can unmute and talk. Hello. Yeah, go ahead. Hi, Akarma. As this call is about secured attachment styles, I just wanted to ask what should we work on, or how should we go about working on ourselves to gain this kind of secured attachment style? See,
first and foremost thing which is extremely important is to always remember the goal. So anyone who wants to work towards secure attachment style should always have absolute clarity about the qualities of a secure attachment style person. So that should be absolutely clear. So if we are already recording this conversation, so you can listen to this one again. If anybody wants a more crisper definition, I think we have a 10 minutes video on our YouTube channel, which talks about the qualities of a secure attachment style person. So at least make sure you have listened to that video, that audio, few times, so it's ingrained in your mind. This is the image, this is what I am trying to achieve. तो उसको हमेशा ध्यान रखना है. पहली बात तो ये है कि what we are trying to achieve. So वो qualities की एकदम absolute clarity होनी चाहिए कि this is the qualities I want to imbibe. Second thing is, pick one or two qualities in that one, whichever one you resonate. We talk about 5 qualities. You don't have to take all 5. You can take one and experiment with one and say, for let's say next 1 month or 2 months or 3 months, I am going to just pick this one quality and make sure that I imbibe this quality. So in doing that, whatever challenge you feel that you are facing, whatever is coming, any resistance, any fear, any insecurity, any lack of information that you don't know how to do this and that, whatever is there, then find solution for that. So make that your target. ये करना है. और if I want to, let's say one of the qualities is interdependence. So want to create interdependence, want to move away from codependence in your relationships and create interdependence. Then what does interdependence means? Understanding it properly, reading about it, fully understanding कि interdependence का क्या मतलब होता है. If you understand interdependence conceptually, that's good. Then you need to still sit and think, what does it mean in practical sense for me? How interdependence would look like for me, not like look like in a example sense. वैसे देने के लिए तो हम 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं इंटरडिपेंडेंस के, बट इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट मेरी लाइफ में, मेरे लोगों के साथ, मेरे आसपास के लोगों के साथ, पीपल आई एम in my family, at work and all that. What does interdependence means? What does it? How does it transcribe that way? So create a mental picture of it first. Create an understanding कि what is exactly what you are trying to achieve. And then once you have a good mental picture of that one, then you see now to achieve this, are you feeling any hesitation, any resistance? Then those are the improvement areas. Those are the things that need to be worked upon. And you bit by bit start working on that and start addressing those things. Amy, I have for now I have this much to say. Yes, I understood, and thank you for the reply. Okay, great. And one of the things obviously which comes in our way that you are currently working on anyway are our mind blocks and energy blocks. So those are the big blocks that mostly people carry. So first we need to address those ones, get them out of the way, and that work many of you are already doing with us. So so those are the they are the big rocks. तो एक बार उनको हटा देते हैं, तो उसके बाद जो छोटे मोटे बचेंगे वो तो आप खुद ही कर ही लोगे. Yeah, and I am not getting some of these messages, like today's call message also. I
I'm not, maybe I am not in any of the relevant groups, or I don't know. So today, because my sister was talking about it, I got the link. So have I to maybe okay, I can message you later about this and we can continue. Yeah. Sure. Okay. Anybody else? If there is nothing, then we can wrap up also. Nothing from my side. Anything you want to say, Anamika? Just the last question, Garma. After a lot of Yes, whatever you guys have gone through, you and Anamika, like as in the journey that you guys been doing, do you guys still slip off and go to your anger issues at times, or anytime like self-sabotage comes, or it has completely vanished? See, you are asking the same question that Shuchi was trying to ask, but in a different way. So, see, again, this tendency to see कि किसी चीज की कोई एंडिंग है, ये एक लिमिटेशन है. ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है. क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से आता है ना? ये क्वेश्चन हमें क्योंकि we see कि everything has a start and an end. So life is not like that. It's not like that. Of course, we also feel angry and all that. Point is not that. See, सेल्फ वर्क कर रहे हैं. अनामिका ने जैसे शुरू में भी बोला था कि सिक्योर, इट डजंट मीन सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. पीपल डोंट फील एंग्री, डोंट फील दिस. सी, हम रोबोट्स थोड़ी बन गए हैं. अभी कोई कुछ बोलेगा तो हमको दुख तो होगा ही, ये होगा. तो it's not like that. मेरे one of my masters, he says, he's used is very funny. वो बोलते हैं ना कि enlighten हो गए हैं, सब्जी थोड़ी बन गए हैं वो. Thank you. तो आप सब्जी थोड़ी बन जाओगे. तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन ही नहीं है. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो आता है जाता है. हम यहाँ पे अटकने की बात कर रहे हैं. हम जो अटकते थे, हम वो अटकते नहीं है. ओके, राइट. सो क्वेश्चन, सूची को भी हम यही समझा रहे थे इतनी देर से, क्योंकि वो एंड गोल पे उसको ये लगता. सो ये वो एंड में भी अटकना ही है. ये क्वेश्चन में भी अटकना कि वो कब आएगा, ये भी एक टाइप का अटकना ही है. इस अटकने से ही बाहर निकलना है. हाँ जी, ये क्यों क्वेश्चन मुझे बार बार एक्चुअली बॉदर करता है, बिकॉज आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता. तो उसमें बोलते हैं ना, काम क्रोध एंड इसको यू जस्ट हैव टू ओवरकम ऑल दिस, एंड व्हेन समबडी गेट्स एंग्री दे से व्हाट लर्निंग यू हैव डन, यू तो कंप्लीटली स्टिल लाइक दैट. वो लिमिटेशन है. वो आई फुल्ली अग्री विद यू. वो एक लिमिटेशन है, और वो बहुत बड़ी लिमिटेशन है. इनफैक्ट वो बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है, और वो बहुत गलत लिमिटेशन है. क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लोग इनकॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. उसकी वजह से लोग प्रिटेंड करने लगते हैं. अंदर से उनको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, बट मुंह से वो मुस्कुरा के बोलेंगे क्योंकि गीता में ऐसे लिखा है, या कृष्णा ने ऐसे बोला है, या जीसस ने ऐसे बोला है. तो अरे वो बहुत बहुत ज्यादा, वो those people are more fucked up than others. उससे बेटर तो वो नहीं करते तो बेटर था. एटलीस्ट जब गुस्सा आ रहा था तो गुस्सा तो कर रहे थे. अभी तो उनको गुस्सा आ रहा है और वो कर नहीं पा रहे हैं. ये तो और भी ज्यादा फक्ड अप सिचुएशन है. राइट. हाँ. And I think I have lived this mess whole my since childhood. Like I belong from a very religious family जहाँ पे बाबा जी के प्रवचन और ये गीता वाला ज्ञान, which I really value गीता का ज्ञान, बट ये चीज की बिल्कुल परफेक्ट होना है, दूसरों का सोचना है, दूसरों के भले के लिए सोचना है. मतलब पहले खुद का भला करा ही नहीं है. अरे आप पहले ये देखो ना. आप मेरे को एक एनलाइटन बीइंग, जो हमारे ही, चलो हिंदू धर्म की ही बात कर लेते हैं यार, मतलब डू यू कंसिडर शिव इज एन एनलाइटन बीइंग? उनको भी तो गुस्सा आता है. जब गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं. डू यू नो अभी हम नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम दुर्गा, काली, सबको. सो किसकी क्या बात कर रहे हैं हम? किस गुस्से के ऊपर कंट्रोल? मतलब वो लोग जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जो एनलाइटन मान रहे हैं, उनकी हम उन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं गुस्सा आना खड़ा. ये कैसी सोच है? ये इनह्यूमन है.
This is Right. actually cruel. To expect people to not express that is cruel. हाँ, एक्चुअली मुझे शायद बचपन से ऐसा किया गया है कि whenever I showed my anger, I've been told like क्या लर्निंग हुई है तुम्हारी, तुम तो ये ऐसे ही हो. तो I think then I can understand now and I need to हाँ get my anger out. I think yeah. हाँ, और यहाँ Thank पे you. हम दुर्गा, काली और रुद्र और इन सब की पूजा कर रहे हैं और इन सबको हम ये मान रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये बात करें. कैन यू सी द डिस्कनेक्शन बिटवीन द दिस Absolutely, इटसेल्फ? absolutely. हाँ जी. सो ये इनह्यूमन है, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ना हो. हाँ, हम इन चीजों पे फोकस करते हैं. अटकना नहीं है. अटकने का मतलब कैसे होता है कि मान लो कि आपको किसी ने आके आपको कोई गाली दे दी. जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ. आज ही हम बात कर रहे थे और लोग हमको पीपल हैव पोस्टेड दिस ऑन सोशल मीडिया अबाउट मी एंड ऑल दैट एज वेल. सो क्या होता है कि मैं, मान लो हम ग्रुप्स में किसी को मैंने कोई मैसेज डाला, पीपल आर इग्नोरिंग द मैसेज. फिर मैंने टैग करके मैसेज डाला, पीपल आर स्टिल इग्नोरिंग द मैसेज. आई फील वेरी डिसरिस्पेक्टफुल विद दैट. आई फील कि किसी को, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, आप देख रहे हो, आप मैसेज पढ़ रहे हो, आपको टैग किया, 4 बार मैसेज किया है, एंड समथिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड देन आई किक देम आउट ऑफ द ग्रुप. तो पीपल हैव पोस्टेड दिस कि ये लोग तो बहुत रूड हैं, ये लोग तो ये निकाल देते हैं, ये लोग एक तरफ बोलते हैं कॉन्शियस हैं एंड ये है, इनको तो खुद ही नहीं पता है कि कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, तो रूड है, ये है, वो. पीपल पोस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड आई डोंट रियली केयर. आई जस्ट नो दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल. वो चीज खराब लगी, हुआ, गया. लेकिन अटकने का मतलब क्या होता है? अटकने का मतलब ये होता है कि मेरे को किसी ने, अब मैं उस चीज में लग जाऊं, अरे ये भी इग्नोर कर रहा है, वो भी इग्नोर कर रहे हैं, सारे लोग मेरे को इग्नोर करते हैं, मेरे को तो कुछ समझते ही नहीं है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो 10 साल पहले भी लोग इग्नोर करते थे, मेरे को तो ये अटकना. Got you. राइट. जब हम स्टोरीज बिल्ड करने लगते हैं ना उस इंसिडेंट के ऊपर, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोला, आपको उसकी बात पे गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, आपने अपना गुस्सा, इरिटेशन एक्सप्रेस कर दिया, ओके. पर उसको, ये तो मेरे से ऐसे ही बात करते, ये तो हमेशा मेरे को इंसल्ट ही करने की कोशिश करते, तो मेरे को नीचाई दिखाते, ये तो मेरे को हमेशा ऐसे ही करते, यही करते, 10 साल से ही कर रहे, 20 साल से यही कर रहे, हमेशा ऐसे ही करते. इसको हम अटकना बोलते हैं. ये वुंड्स हैं. These Thank you. things Thank need you to be so much. addressed. हाँ, बाकी तो इंसान है, मच्छर काटेगा तो दर्द होगा, आग में हाथ डालूंगा तो मेरा भी चलेगा. तो we have not become robots. हाँ. हाँ, तो अटकना नहीं है, इन क्वेश्चंस में अटकना नहीं है, और इसमें भी नहीं अटकना है कि ये कब मिलेगा, ये कब होगा, ये कब हम वहां रीच करेंगे. कभी नहीं रीच करोगे, क्योंकि पॉइंट वहां रीच करने का है ही नहीं. पॉइंट इज अगेन, इट्स, वो रीच करने वाला क्वेश्चन अगेन इज गोइंग टू द मेडल. पॉइंट कभी मेडल का था ही नहीं. पॉइंट वाज ऑलवेज अबाउट योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्राइंग टू गो फॉर द मेडल. Right. मेडल तो हमेशा से इमेजिनरी था. Actually, yeah, I've just now I can actually correlate things thoda bahut because I've taken this oath that I don't want to be on medicines anymore because this year has been very shocking for me, as in like since my whole childhood and abhi tak like I've been on medicines and a lot of things. So I get taken a pledge that I don't want to. और जब वो किया है तो of course now this makes sense कि transformation करना पड़ेगा, and then of course you have to stick on to a lot of things, then only that metal will come, otherwise it won't. And but उसको follow नहीं करना है बार बार, so it makes sense to me. Thank you so much Akarma, thank you. And then one of the qualities of secure attachment style people that we touched upon is this emotional intelligence itself. And emotional intelligence, if you guys read about it, all that, nowhere emotional intelligence means to suppress your emotions and all that. It is all about expressing them intelligently. So be able to create that kind of intelligence where you can express your emotions intelligently and also handle the emotions of other people more intelligently. So are we talking about EFT then? Are we talking about what? EFT, emotional, like as in when we are not able to express in front of others. No, also. No, okay. No, not that. I'm talking about emotional intelligence only. So this is about
about having this first and foremost, intelligence की suppression is not an answer of anything, right? Right. So हाँ, initially क्या होता है कि again these things also happen in stages. So when we tell people express, तो तो initially you will probably start to express your emotions in a very crude way, जैसे आया वैसे ही. तो वो वो बहुत रूड और क्रूड और डंडे की तरह किसी को लग सकता है ना. हाँ तो जी, आपको हाँ जी. किसी पे गुस्सा आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं ना. गुस्से को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है ना कि मेरे को उसके सिर पे डंडा मार के उसका सिर फोड़ना ही है. सो रेज इज नॉट द आंसर ऑल द टाइम ना. जरूरी नहीं है ना कि यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रेज. You can also express it in many other ways. So expressing it more intelligently, जहाँ पे there is a mix of compassion for yourself and for the other person. तो आप दबा भी नहीं रहे हो, but compassionately you are also mindful कि आपके एक्सप्रेस करने से दूसरे को कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है. Okay. तो ये सारी चीजें सीखने वाली है ना. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो स्टेजेस में ही सीख पाते हैं ना हम. हाँ जी. So I'm sharing this thing, and I am not expecting anyone to reach that place in like first jump itself. तो हम करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे, फिर पता चलेगा, फिर और ट्राई. सो इट्स एन इटरेटिव अप्रोच. हमें पता है कि हाँ, ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे वी कैन एक्सप्रेस इट कॉम्पैशनेटली, कि हम अपने आप को भी परेशान नहीं करें, दूसरे को भी परेशान नहीं करें, और बात एक्सप्रेस भी हो जाए, उनको मैसेज भी मिल जाए. तो that is the emotional intelligence, that is a job in itself. So that is to be done in stages and in iterations. And one of the things that comes in our way to do this is, again, as we talked about, is all our conditionings, our mind blocks, our energy blocks, all these things, all these insecure attachment style that we are carrying. वो करने के लिए पहले ये ड्रॉप करना होगा. तो होता क्या है कि हम नेगेटिव से ना सीधा पॉजिटिव में जंप मारने की कोशिश करते हैं. तो हाँ जी, नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जाया जाता है. नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए बीच में जीरो भी आता है. तो वी फर्स्ट हैव टू गो टू जीरो. ये लास्ट टाइम आपने बताया था. करेक्ट. सो जब तक हम खाली नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम भरेंगे क्या. तो वो नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव को भी मिक्स करके अभी सब कीचड़, मिट्टी, गोबर पड़ा है अंदर, उसी में हम मिठाई भी डाल रहे हैं. तो वो मिठाई तो खराब ही होने वाली है ना. तो देयर इज नथिंग. पहले साफ तो कर रहे हैं अपने आप को, पहले ये चीजें निकालें, पहले इन चीजों के ऊपर काम करके इनको निकालें. वो जो हम बातें बता रहे हैं, they can be more aspirational, or you can take them as a goal, कि वहां पहुंचना है. मैं ये बोल रहा हूँ वहां पहुंचना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहां एक ही जंप में पहुंचना है. तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि यहाँ पहुंचना है मुझको, ये फॉर द टाइम बिंग दिस इज द माइलस्टोन. आई नीड टू रीच दिस माइलस्टोन. और इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए बीच में हो सकता है और 10 कैंप्स आएंगे. I have to do many things, but this is the first milestone, that before I go into positive, I want to first go to zero. I want to first go from negative to zero. Negative to zero is my first phase of transformation. Next phase of transformation is zero to positive. At least 2 stages में divide तो करो. लोग तो सीधा ही नेगेटिव से पॉजिटिव में, सीधा ही पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीधा इसी में घुस जाते हैं. Makes sense, yeah. And what Karma's words also mean, and what is the Karma and Anamika teach as well, is because that is how what I learned to move towards secure attachment style is not beating ourselves for being angry or going through such humanly emotions, because
I have done it all the life, like based on the conditioning of our society, right? Being angry is wrong, and how it has been preached by our babas, or in ki काम क्रोध मोह माया को से दूर रहो. So that's what my biggest learning with them is कि सबसे पहला कंपैशन तो खुद के साथ, मतलब विच आई एम स्टिल लर्निंग टू बिल्ड एट ईच लेवल. बट क्योंकि जब हमने हमेशा से सीखा ही नहीं है खुद ही के साथ कंपैशनेट होना, और अपने ये ह्यूमनली बिहेवियर को नॉर्मल समझना या एक्सेप्ट करना, या खुद को उसके लिए पिटाई नहीं करना खुद की कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने ये पूरी जिंदगी किया है. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग सिक्योर, विच आई एम स्टिल ऑन. So yeah, this I wanted to add, and I think this is what Akarma's point is. Yeah, exactly. Thank you, Suchi. Thank you, Karma. Thanks everyone. Thanks. Great. मेरे पास तो और कुछ नहीं है बोलने के लिए. Yes, Tarun, you want to say something? Yeah, Akarma, just a very basic question. Yes. So, is the secured attachment style of a person will be same when he was a kid, when he grew up, and he became? Yeah, that's a good question. It actually, to be honest, all kids are already secure attachment style only. They become insecure in the upbringing itself. Right. So it means as the conditioning goes, as the soul becomes from pure to impure, and then more impure, and then more impure, and then when does that you happens and it starts becoming more purer? If that you happens, then probably that journey starts, right? So spiritual journey, spiritual awakening, that we normally use the term. So मेरे experience में तो I have never met any person in my life. I've never ever, like this is 100% I'm saying, I've never come across any person who's been on a spiritual journey, spiritual awakening, जिसकी life में कुछ problem नहीं हुई थी. तो literally every person I know at least, उनकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. तो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट. आई हैव नॉट कम अक्रॉस इवन वन पर्सन who was all happy, hunky dory, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में and all that, and they are actually doing they're doing like spiritual awakening or spiritual journey. तो वो होता ही तभी है जब the person hits the rock bottom, emotionally, mentally, physically. People go through different kind of traumas, different kind of breakdowns and all that, but that is the trigger point. That is literally the trigger point for any spiritual awakening, for anyone, at least I know. Right. Thanks. उसके बिना होते हैं लोग, लाइक मैं अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ. सो आई एम यूजिंग द वर्ड अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पेसिफिकली. उसके बिना भी आपको लोग मिलेंगे जो इन सब चीजों के बारे में बहुत बातें करेंगे, फिलोसॉफिकल एंड ऑल दैट, बट वो सिर्फ मजे के लिए करते. उनको बस मजा आता है इन सब बातें करने में. उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उनको बस इन कॉन्सेप्ट्स में, इन टॉपिक्स में बहुत मजा आता है. बातें करते, इंजॉय करते, मजा आता है. मैं ऐसे नहीं कह मजे ले रहे हैं, उनको मतलब इंटरेस्ट आता है. दे आर पैशनेट अबाउट दिस, दे आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस. बट उनकी लाइफ में कोई आग नहीं लगी हुई थी किसी चीज. उनको वो प्यास नहीं, उनको वो दे आर नॉट दैट मच, वो अवेकनिंग नहीं है. तो वो बस इट्स जस्ट लाइक टाइम पास. वो हॉबी है, वो कुछ भी हो सकती है. किसी को गोल्फ की हॉबी हो सकती है, किसी को कार्स की हॉबी हो सकती है. उनको उस चीज की हॉबी, उनको उसमें मजा आता है, बस वो मजे के लिए करते हैं. तो फिलोसॉफिकल भी होते हैं बहुत सारे लोग जो फिलोसॉफिकल एंगल से बहुत पढ़ते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं इन सब चीजों में. बट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल तक रहती है, बहुत ही एकेडमिक बुकिश लेवल तक रहती है. उन लोगों को रियलाइजेशंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन की कोई नीड नहीं होती.
यही very लोग deep. अपने आप को शायद बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं. Correct me if I'm wrong. हाँ, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है. समझते करें. Because they haven't seen the heat, they haven't felt that heat or that hunger. हाँ, they come a lot from opinions and shoulds and shouldn'ts and must and And mustn't and intellect, all that. very कि intellectual. गीता में ये लिखा है और पुराणों में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, तो they are more coming from that angle. ये लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. उन्होंने झेला नहीं. और उनमें कंपैशन भी नहीं होता है रियल. कैसे आएगा कंपैशन? के लिए एम्पैथी, एक्सपीरियंस की जरूरत है ना. जो चीज झेली ही नहीं, कहाँ से आएगा कंपैशन? और जो सबसे ज्यादा जरूरी है. इसलिए वो बातें कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं. गीता की बहुत अच्छी डेफिनेशंस आपको बता देंगे, श्लोकों की बहुत अच्छी डेफिनेशंस ये बता देंगे. और लेकिन उनको सब पता है. हाँ, तो दैट इज द लाइक द अनफॉर्चुनेट पार्ट. तो वो टाइप के लोग भी होते हैं, बट उसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं बोलते. दे माइट से दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल दैट. वो क्योंकि वो सब ये सब कर रहे हैं तो उसको जर्नी का नाम दे देते हैं, बट दैट इज नॉट द जर्नी वर्ड दैट वी नॉर्मली यूज. we call the journey always starts with a tragedy. ये तो यही है, जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट ही ट्रेजेडी है. And that tragedy could have happened in your past life also. Some people carry forward that. Some people are so some kids are born quite enlightened that way, like काफी mature होते हैं. You can interact with those kids and you see कि उनकी बातें बहुत mature होती हैं and they have very good understanding about things and all that. So उनकी कोई ऐसी tragedy रही है जो carry forward हुई है. उनकी awakening अभी भी चल रही है. Thanks. Deepika, your hand is up. Yes, so I'm just trying to clarify on one thing regarding the secure attachment style personality. Is, for example, I mean, what I have concluded out of this, just I would need some clarifications or if there is anything to be corrected here. So, for example, if someone moves from or grows from an anxious attachment style to a secure attachment style, so in the same situations where the person used to get triggered previously, he or she would get triggered in a secured attached person as well, but the trigger will not be that deep or will not initiate a reaction rather than a response Trigger, that will not disturb him correct. internally or externally. Correct. They will still get disturbed, but उतने लेवल का नहीं होगा जितना पहले ही उनको जैसे झंझोड़ देता था वो चीज. But the person will not get wounded deeply like the person used to get, and they feel more secure. They feel more secure in themselves. They have more self-confidence, they have more self-esteem, more self-worth. They know that the trigger will come and go like a ripple on the surface of the ocean, right? It will not go like an undercurrent. हाँ, पहले कोई चीज आपको हफ्तों के लिए, महीनों के लिए डिस्टर्ब कर देती थी, अब वो कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए डिस्टर्ब करेगी and then you are back. And their response would also not be in such a way that would hurt people. Correct. So response will also be very emotionally intelligent response. Very emotionally intelligent response. Correct. More compassionate about it as well. Correct. So that is the sign. Those are the signs कि वो हो रहा है तो we are on the right track. बाकी emotional intelligence is not like IQ. It's not that we can measure someone's emotional intelligence. इसका scale तो it's infinite. So IQ को आप measure कर सकते बता सकते हो कि किसी का ये है वो. Emotional intelligence is, you can keep becoming more and more emotionally intelligent. Doesn't matter. There is always room to become more emotionally intelligent.
There Like is for no example, IQ. ceiling. Hmm. Right. For IQ, there is an above average, below average thing. There is nothing such average Huh. scale or benchmark for EQ. There is no such thing. No. So once you are on this track, you are on this track. You just keep improving. You just keep becoming better. Keep responding better. आज आपने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है वो आज के लिए बेटर है. आपको लग रहा है कि हाँ पहले से तो मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पहले ये चीज होती तो मैं ऐसे करती ये करती, आज मैंने इस किया. लेकिन आप देखोगे कि हाँ इसमें भी और भी इम्प्रूवमेंट के चांस हैं. अगली बार कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं. तो इट्स नॉट कि हाँ बस हो गया, अभी मेरे को पता चल गया, यहीं बस यहीं रुक जाऊं. चाहो तो आप वहीं रुक जाओ. अब आपको लगता है हाँ पहले मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करती थी, अब ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, अभी मैं यहीं रुक जाऊँ, मैं ऐसे ही रिस्पॉन्ड करती हूँ. दैट्स फाइन, बट यू कैन स्टिल इम्प्रूव इन दैट ऑल्सो. Yeah, and I might be going a little off track, but believe in another concept that EQ also depends on the age of the soul and not of the biological age. Because when we see people younger to us and they have a better EQ, or हाँ people अब जैसे beyond our age but they एज, have a very low EQ. एज ऑफ द सोल की बात करेंगे तो एवरीवन इज सेम ओल्ड. all souls are of the same age. No, but we call people old souls or young soul. हाँ वो हमारी लैंग्वेज है, वो हम इंसानों की डिराइव की लैंग्वेज है. ओल्ड सोल्स और यंग सोल्स का जो मतलब है वो ऐसा नहीं कि ये सोल बाद में क्रिएट हुई और वो सोल पहले क्रिएट हुई. इट्स नॉट लाइक दैट. ओल्ड सोल रिफर्स टू द थिंग कि इसने पहले भी कुछ रियलाइज किया हुआ है. और यंग सोल्स आर दो जिन्होंने लाइफ तो बहुत सारी ले ली है लेकिन रियलाइज कुछ नहीं किया. Okay, so that means EQ is directly proportional to the lessons that we have learned and the growth that we have Exactly. experienced. Okay. या सो ये जो हम बोलते हैं ना कि खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, दिस इज अ टोटल बुलशिट स्टेटमेंट. कोई खाली हाथ ना तो आता है ना तो खाली हाथ जाता है. materialistically yes, but not in any other way. So whatever we have learned, हम पुराने कर्म लेके आते हैं, यहाँ का डेट वापस लेके जाते हैं. सो दैट्स दैट. और बीच का जो टाइम है उसमें हमने जो भी संस्कार डेवलप किए हैं, जो भी सोल के संस्कार डेवलप हुए हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं. Yeah, that's correct. So basically, everything comes down when we reach that 0 point. हाँ, the enlightenment, which is कि ये पूरा गेम खत्म. जीरो से स्टार्ट हुए थे, जीरो पे ही खत्म. शून्य से स्टार्ट हुआ, शून्य पे. बीच में जितना नेगेटिव एक्यूमुलेट किया, उस नेगेटिव को खत्म करने में जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, that is what we term as someone's old soul or whatever is. मतलब इन्होंने कुछ तो इनके पास के कर्म, पास की संस्कार जो इन्होंने कुछ कैरी फॉरवर्ड जो दिख रहे हैं इस लाइफ में भी दिख रहे हैं कि ये बच्चा है लेकिन इसकी बातों में इतनी डेप्थ है, इसकी समझ में इतनी डेप्थ है, ये दिख रही है. ना तो उसको किसी ने सिखाया है. उसके पेरेंट्स को देखोगे, उसके पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा इवॉल्व है, बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर है. तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो सब. तो कोई खाली हाथ ना तो आता है ना तो खाली हाथ जाता है. नेगेटिव लेके आए थे, नेगेटिव लेके ही जाएंगे, बट डिपेंड करेगा कि अब वो ज्यादा नेगेटिव हो गया है या कम नेगेटिव हो गया है. दैट इज व्हाट दिस लाइफ विल डिटरमाइन. ऑलराइट, काफी हैवी हो गया अभी. कहाँ से कहाँ बात चली गई. ऑलराइट, सो
Anything else? Should we wrap up then? Great. Okay. Thanks, Tarun. All right, guys. So let's wrap up and have a good coming week. So we'll talk next week. Thank you Good so night, much, everyone. guys. Have a great week. Thank you, Anamika. Bye. Thank you, Bye. Karma. Take Thank care. you. Bye Bye. bye. Thank you, Bye. Nikhil. Bye. Bye bye. Good night. Good night.